सो अभी तक जो आपने सीखा है उसमें जो कैपिटल आर हम डिनोट करते हैं रेडियल वेव फंक्शन, उसको स्क्वायर करते हैं, देन यू गेट this electron density. When you multiply it by this volume element, well, volume of the thin shell, spherical thin shell, then you get this probability. ये तीन सीक्वेंस आप ध्यान में रखिए. एम्पलीट्यूड with position with radius, then electron densities, we square it, you get the electron density, multiply electron density with the thing. कौन और कोई है? ठीक है. सो हम लोग यहाँ थे. आपको जो ओके, सो द दिस terms are capital R square, then this thing. So this is electron density, I told you, and then you are multiplying electron density with the dV, volume of the thin shell, of thin shell, incremental thin shell with thickness dr, with thickness dr. So that's what you, when you do this, you get probability. This is your probability. The term probability जो आपको 11th क्लास में बताया गया या फिर बीएससी में भी बताया गया होगा, वो ये वाली probability है. ठीक है. और actually now you know that this is the probability of finding electron in a thin shell at distance r from the nucleus with a thickness dr. Dr is infinitesimally thin, very infinitesimally small thickness, infinitesimally small थिकनेस. इनफाइनाइटेसिमल कहने का मतलब क्या होता है? इतना छोटा है कि उसको आप मेजर ही नहीं कर सकते. और यू कैन ऑल्सो से इमेजरेबल, समथिंग दैट यू कांट मेजर. इतना छोटा है कि आप अवेलेबल, आप जानते हैं कि समथिंग दैट इज इमेजरेबल, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, उसको इनफाइनाइटेसिमल कहते हैं. ठीक है. तो और ऐसे कई सारे कॉन्सेंट्रिक शेल्स को अगर हम करें, इमेजिन करें, तो एक पूरा का पूरा स्फीयर बन जाता है, राइट, till the infinity. So radius when r is infinity, so you can make up the whole thing when you once you integrate of everything. Uh, so total probability from minus infinity to plus infinity, always it has to be 1. probability जो total probability होती है 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती कभी भी. ओके. तो ये आपका था sequence of things, radial wave function, radial electron density and probability फंक्शन को ही आप probability बोलते आ रहे थे, मेनली यही था. ओके. एंड यस. सो और अब कौन है बीच बीच में डिस्टर्ब करते हैं यार? सुष्मिता कितने नाम से आ रही है? श्री सुष्मिता. कमाल. कितनी सुष्मिता है भाई इसमें? ओके. एनीवे, so the sequence is now clear what we mean by each of these terms, right? So remember, you have been, what we have been considering all along is that ये ये वाला पार्ट ध्यान रखिएगा. यहीं से सारा अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होती है. अदरवाइज आप प्रोबेबिलिटी रटते रहिएगा जैसे पहले रटते थे, वैसा नहीं कीजिएगा प्लीज़. दिस इज डिस्टेंस आर, यहाँ पे ये डी आर, तो ये आर जैसे जैसे चेंज होगा वैसे
ऐसे प्रोबेबिलिटी चेंज होगी। सो इसको आप डीवी जो है ये वॉल्यूम ऑफ दिस थिन शेल, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम यही हम कर रहे हैं, और तब जाके ये प्रोबेबिलिटी वाली कर्व ऐसे आ रही है। ओके। और ये जो डेंसिटी हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो भी उसको भी प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। और ये क्या है, ये जो नॉर्मली जो इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, इट इज प्रोबेबिलिटी इन अ फाइंडिंग इन अ थिन शेल दिस थिंग। तो इन थिन शेल एट स्पेसिफिक पॉइंट, इन दोनों वर्ड से काफी अंतर आ जाता है, ठीक है। तो सिंपल जो स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन हम कर रहे हैं, रेडियल वेव फंक्शन का यहाँ पे स्क्वायर करके हम वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, और in other words it is giving you probability at a specific point. Then you are multiplying this density with the volume of the thin shell and you get the probability of finding that electron की ये distance r पे इधर 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 इस पूरे शेल में कितना, what is the probability that is conveyed by this term, एंड दिस इज द थिंग दैट डिफाइंस। और जहाँ पे मैक्स, जब ये दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, आर स्क्वायर वाला ये ब्लू लाइन, फिर 4 पाई r स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं, जहाँ पे मैक्सिमम आता है इसको मोस्ट प्रोबेबल रेडियस कहते हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मोस्ट प्रोबेबल रेडियस। और ये जो मोस्ट प्रोबेबल रेडियस है 1s के लिए हाइड्रोजन एटम में, इट इज फाउंड टू बी एग्जैक्टली द सेम एज फॉर द एज डन इन द बोर्ड्स मॉडल। बोर्ड ने जो कैलकुलेट किया था ठीक उसके बराबर ही आता है। और लेकिन अब हम वी आर नॉट विजुअलाइजिंग दैट एज अ फिक्स्ड पाथ। ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि बोर्ड्स मॉडल में वो 100% ऑफ द टाइम वो वही उसी डिस्टेंस पे एक सर्कल में मूव कर रहा था, बट नाउ वी आर नॉट इमेजिनिंग इन दैट वे। इट इज फॉर मेजर टाइम इट मे बी देयर इन दैट circle, but it is also found elsewhere up to the nucleus also, right? So we have seen that electron density is maximum at the nucleus। तो ये न्यूक्लियस के काफ़ी करीब तक भी अगर थिन शेल होगा तो उसमें प्रोबेबिलिटी फाइनाइट आएगी, वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस इट इज़ फाइनाइट, एंड देन इट राइजेस लाइक दिस, कर्व गोस लाइक दिस। ये सारी चीज़ें आपको बताया, और सिचुएशंस आप समझ रहे हैं कि probability the orange line here is zero. Why it is zero? Because not because the electron density is zero, because the 4 pi r square term is zero, right? ये जो 4 pi r square है, r zero small r, जो when radial distance is zero, you are at the nucleus, this term goes to zero. So zero multiplied with the maximum value of electron density gives you zero, ठीक है ना, इसलिए वो ऐसा आता है। और दूसरे केस में जब यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं तब वो 4 पाई r स्क्वायर टर्म तो काफ़ी लार्ज है, बट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ऑलमोस्ट अप्रोचिंग ज़ीरो, कैपिटल आर स्क्वायर वाला जो टर्म है। सो ये ऑलमोस्ट ज़ीरो, राइट। 4 पाई r स्क्वायर इज राइजिंग, 4 पाई r स्क्वायर very large at this point. So because it is going to, when you multiply these two, you get nearly zero probability. So you get near zero probability at a distance very far away from the nucleus, because the electron density goes approaches zero, is tending to be zero. Okay, not because the volume is zero. तो सो दोनों एक्सट्रीम सिचुएशन में दो अलग अलग वजह से वो ज़ीरो हो रहा है, ठीक है ना। एक बार एक में तो 4 पाई r स्क्वायर इज ज़ीरो, द वॉल्यूम ऑफ थिन शेल, और दूसरे केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही ज़ीरो होने लगता है, इसलिए ज़ीरो। तो ये आपको समझ में आ रहा है, बीच में कहीं पे दोनों की फाइनाइट वैल्यू है और वहाँ पे आपको मैक्सिमम आ रहा है। नाउ व्हाट, आशुतोष महाराणा आज सब जाग रहे हैं धीरे धीरे, जाग रहे हैं, चलो जब जागो तभी सवेरा। ओके, सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। एस ऑर्बिटल के केस में, 1s के केस में जो अभी हमने डिस्कस किया, ये तीनों ग्राफ
So I think this is मेकिंग इट क्लियर. कल भी डिस्कस किया था, बट चूंकि ये इम्पोर्टेंट है इसलिए एक बार फिर से आपको डिस्कस कर दिया मैंने. Okay, so you understand the point. First case, the other extreme, at the very far away from the nucleus, the capital R approaches zero rapidly, and although 4 pi r square is large, it will be still the multiplication term is will be zero. So, but somewhere in the middle, both will have finite values. You multiplied them, and you get the maximum probability. So this maximum probability is same as the uh, calculator by Bohr. And so we are here, we now understand what that we get the wave function, radial wave function, capital R, amplitude variation as a function of radial distance r. The second thing, it tells you about the electron density as a function of r. And third, when you multiply with 4 pi r square, it gives you probability of in an finding electron in an incremental thin shell, the thin shell as visualized here. तो इसमें हर एक छोटे ऐसे कई सारे concentric shells होंगे और सब में at a distance r with a thickness dr जो एक shell assume करेंगे, उसमें probability calculate करते हैं इस तरह से. Okay, so all these things were discussed in the last class. Now you know we have compared also the 1s case, this is the 2s r and r squared, and then multiplication multiplied with. So first graph is important because it tells you the amplitude, where is the maximum amplitude. The second tells you where is the maximum electron density for this simple squaring of the things, and then third one tells you where is the maximum probability of finding the electron in the at a distance r. So distance r में चारों तरफ घूम घूम के जो पूरा एक शेल बनेगा जब भी आप सेम डिस्टेंस पे आप मूव करते हो इन ऑल डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस. सो उसमें जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको आप इससे डिनोट करते हो. अब कौन आया, एक एक करके नॉक कर रहे हैं सब. सबको तो मैंने ईमेल किया हुआ है, क्यों नहीं रुक रहे हैं. प्रदीप, वाह, जाग गया ये भी. So Pradeep, this is your first class, right? Yes. Even after messaging personally, you don't respond. Okay. So this is your okay. Anything you want to say? No. So please mute yourself. एक बार अगर कुछ कहना है तो बोलिए, नहीं तो अपने आप को म्यूट ही रखिए. Okay, so this is what we were discussing in the last class. We had done this in a similar fashion. So most probable radius is the term that you get to know. We now onwards will be always be talking about most probable radius. Now because you are taking into account the Heisenberg uncertainty principle, you can't be so sure, but most of the time the electron is likely to be found here where you have this maximum appearing. Okay, and then we distinguished so p orbitals, 2p orbital, you have the profile is like this, and you square it, you get this kind of thing. So comparison of all this stuff together, 1s, 2s, and 2p in one slide, you get this. So all these graphs are important. How you and you should be practicing more on this. How to predict these curves, how to draw the rough sketches of this um, uh, wave function, radial wave function, radial electron density, and then radial probability. Three things you should be able to do it by yourself. So 2s, second,
maximum radial probability, most probable radius, and maximum amplitude. Okay, so the same thing that we have discussed earlier has been summarized over here for 1s, 2s, and 2p, and this is the case of the 3s. And if you have understood up to now, then you can किसी भी ऑर्बिटल का पूछा जाए आप बता सकते हो। कैसे वो भी मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। सो दिस इज व्हाट 3s, 3p, 3d, 3d, और उसी का फिर इधर स्क्वायर है, सॉरी प्रोबेबिलिटी डायग्राम है इधर। ओके, so what you have done, you have squared and multiplied with 4 pi r square, right? 4 pi r square dr, इससे मल्टीप्लाई किया तो आपको ये वाला मिला। बीच का मैंने स्किप किया है कैपिटल आर स्क्वायर का, वो आपको ड्रॉ कर लेना है खुद से अपनी कॉपी में। प्लीज हैव अ पेन एंड पेपर विथ यू, ओके, ऑल ऑफ यू। ये सिनेमा की तरह मत देखिएगा। हैव पेन एंड पेपर विथ यू, and then I will tell you a few points. So when you are plotting this, आपको क्या ध्यान में आ रहा है, इसके पहले भी ध्यान दिया होगा आपने, जो आपका आपने स्टार्ट किया था मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में, देखिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ है। फाइनली जो प्रोबेबिलिटी डायग्राम है उसमें सबसे ये इधर शिफ्ट इधर आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ये छोटा, सो दो नोड्स हैं, ठीक है, और इसको हम सब नोडल मैक्सिमा कहते हैं। सो दीज आर, सो मोस्ट प्रोबेबल रेडियस ऑफ 3s, most probable radius of 3s, 3p and 3d. look at the thing, most probable radius का पोजीशन देखिए, ये टू द स्केल ड्राइंग है। it is 3s has larger most probable radius as compared to 3p, and 3p has larger most probable radius as compared to 3d, right? Clearly you can see this, and this thing will be okay. So and then in addition to the one maximum that you have observed here, you define most of, you are also observing between 2 points where the electron, the probability is 0, you have a maximum finite and maximum probability happening here in between the 2 points. So this between two nodes you have maxima, and so you call it subnodal maximum. Maxima is plural, this is maximum, वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट। मैक्सिमम, इसको हम मैक्सिमा कह रहे हैं, एक से ज़्यादा हो गया। यहाँ पे अगेन आई विल राइट इट सब नोडल मैक्सिमम, नॉट मैक्सिमा। हियर इट इज सब नोडल मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमा नहीं, ठीक है, मैक्सिमा प्लूरल होता है। सो ये ध्यान रखिएगा whenever you are writing. And the third one, 3d orbitals has does not have any subnodal maximum. Okay, so this presence of a subnodal maxima in the probability curve has great implications, severe implications so far as the energy is concerned इन द मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। जब हम एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तब आपको इस पर डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम सिंपल रखते हैं हाइड्रोजन एटम्स के लिए। और so this is what you have learnt already, and then we also discussed how it will look like. अब in the electron density profile at a distance r, at a certain distance r, you have 0, so corresponding to that you have white here. At the center you have maximum electron density, so if you are drawing it in a colorful way, this is how you कहाँ गया? So this is how you get it. So this is the thing that you should do. So these are the pictures mapping of the electron density in three-dimensional space. So for s orbitals, maximum electron density is at the nucleus, at the center. So you see the shading is very dark, the dark shade
at the center. Then that shade fades away. The blue color slowly fades away, and at the point where it is 0, वहाँ पे white कर दिया गया है. Then again it rises, reaches a maximum. So you see the color again शेड धीरे धीरे डार्क होने लगता है. यहाँ पे डार्क है सबसे ज़्यादा, यहाँ पे फिर से डार्क हो गया और फिर से उसके बाद फेड कर रहा है. दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज गोइंग decreasing, going down and down, and finally it becomes white, totally white at the very large distance from the nucleus. Similarly for 3s orbital, again s electron density is maximum at the nucleus. बार बार बोलने की जरूरत नहीं है. नोड दो नोड हो गए हैं, तो दोनों नोड पे जो वाइट है वो यहाँ पे दिख रहा है. पहले वाले केस में आपने देखा 1s, there is no node, so there is just largest electron density, maximum electron density at the nucleus. Then you are moving in all the different directions at distance r around that nucleus in all directions, so you generate a kind of sphere, and there is no node, nothing. So the nodal surface is a kind of sphere. It represents a spherical shell, right? So the point of 0 electron density, so r at a particular distance r, ये जहाँ पे है हर पॉइंट को कनेक्ट करोगे तो एक शेल बन जाएगा. ओके, सो इन दिस केस, so nodes appear naturally as a result of the wave nature of electron. इस सेंटेंस का मतलब क्या है, आप समझ पा रहे हो? Nodes appear naturally as a result of the wave nature of electron. Nodes का appearance इसीलिए हो रहा है कि it is wave like behavior. Why? How do we define node? Node is a point where the amplitude changes from the positive to negative. The sign of wave function changes from positive to negative. Okay, and in doing so, at some point it becomes 0. The amplitude becomes 0. So that point is node. Okay, so it is oscillatory nature. A wave has oscillations, and in oscillations this happens naturally. You have oscillations, so on one side you have you have a crest, and then it moves to the other side making a trough like thing. So जो normally एक string पे आप देखते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव होना, उसमें भी होता है, और इसीलिए वो nodes का appearance natural है if we are considering the wave nature. Okay, so now this is we have we know about this energy, so this other things will be summed up. So yeah, so energy depends on n square and z square. All other things are constant, which will be called Rydberg's constant. We sum it up as that, or L or ml. So this n tells you about energy. So n quantum number is giving you the energy of electron in the hydrogen atom. In multi-electronic system, it tells you only a part of the energy, measured part of the energy, but not total energy, right? Whenever you have more than one electron. Okay, so L and ml are, these two quantum numbers are required for the angular part of the wave function that we have not yet considered. N and L were required for the radial part of the wave function, and so now we will be trying to understand. L tells you what? L tells you about the angular momentum, magnitude of the angular momentum, which is given by this. Other way we write it like L into L plus 1, और इसके बाद h cross. This is your angular momentum, right? This thing here is your angular momentum. So angular momentum calculate आप easily कर सकते हैं, and then mlh cross, z component of the angular momentum is given by this value. तो z component अगर x y z तीन एक्सिस में आपने component निकालना है और z वाला फिक्स हो जाता है, it cannot change. That means you are fixing the orientation. It cannot have any arbitrary orientation of the angular momentum vector. So this is also called space quantization. I
what you so that is what it means, ml image। एक मिनट, सो एक मिनट मैं आपको थोड़ा बता दूं कहाँ गया। स्क्रीन के बारे में बात, अच्छा ठीक है। सो okay, so now we are moving to the other part, that is the okay. So now what we understand about the energy is, so in terms of r, all other constant term taken together you can describe it in form of r is the Rydberg constant, okay, and you can describe the energy. So this is how the energy changes. You have n, look at this picture very carefully, n, so 1 2 3 till infinity, n is infinity. When it is infinity, you have given so much energy that electron and the proton are at infinite distance, they are well separated from there is no interaction between them. So that's the point where the energy is zero, okay. Remember in the previous class I have already explained why the energies are zero. Please look into that. I have already discussed at length, so it will be repetitive if I will sound repetitive if I again do that. So please look into that. So your energy, when the electron is part of the atom, its energy is in negative. Okay, it varies like this: n square. So it's here. So here n square, 2 square, 9 is 3 square. So like that. So it is like that. So varying. So in the denominator you have by 4 9 and like that. So you also, what you are observing here, the gap is reducing as you move top. The gap between successive energy levels is reducing, and finally at very large value of quantum number, it is so close that almost there is no difference in energy. So this is the continuum. So it forms a continuum, almost forming a continuum. Yeah, so there is continuous. So at very large quantum numbers, the behavior is almost like what described by a classical मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो डिस्क्रिप्शन था कि कंटिन्यूसली एनर्जी वेरी कर सकती है, वैसी ही चीज हमें यहाँ भी देखने को मिली एट वेरी वेरी लार्ज क्वांटम नंबर्स, एट वेरी हाई a large value of quantum numbers, the behavior is same as the, that is also known as correspondence principle in so ये आप बार बार ऑब्जर्व करेंगे जब आप सिंपल मॉडल पार्टिकल इन अ बॉक्स, रिजिड रोटर कोई भी ऑब्जर्व करें किसी में भी, at very large value of quantum numbers the behavior is same as predicted by classical mechanics. So you get this appearance of this continuum is indicates that point. So energy levels, why they are negative, I told you we compare. You have to think it in the reverse way, how an atom would have been formed initially. You consider the electron proton to be at rest, infinite distance from each other, and then the kinetic energy is zero, and potential energy is also zero at infinite separation. Now if they move towards each other, then the energy of the system will decrease, potential energy will decrease, and so you have the energies would be represented like this. So now suppose if you change the he plus, suppose if you are talking about you change, if z changes, proportion energy changes are proportional to z squares. As I told you, energy is directly proportional to minus z square by n square. So remember, this is the correspondence that you have, proportionality. Okay, so change in z will change the energy levels position. So when you are moving from hydrogen to helium plus, that is also one electron system, helium plus, then it will, what you expect. So how will the separation of energy levels will be affected?
for hydrogen this is going like z square by like z is 1 square by 1 square, then next will be 1 square by 2 square, like this, and for He plus and so on. For how it will change, 2 z square will be like, so z square n square का वैल्यू अगर आप करते हैं 2 square by 2 square n square, और इस तरह से आपका सारा 2 square by 3 square and so on. सो ये हर सो आपको आप देख रहे हैं जो सेम एनर्जी लेवल था वो अब आपका गैप जो है, so separation of energy levels will be affected 4 times because z square is this term, z is this is equal to 4. So first energy level will be, because it will become more negative, it will drop down, increases 4 times, and the ground state is lowered down by 4 times as well. So 4 times lower than the hydrogen's first energy level. So first energy level in helium plus is 4 times lower as compared to the hydrogen's energy level, helium plus. So this is all energies are given in negative, so that's so so that is what we so this is when it is electron is feeling the attraction of a nucleus, it is feeling the attraction of protons. That is a bound state of an atom. We call it bound state of an electron or bound state of an atom. So in that case the energy of atom energy is lower than the infinitely stationary electron and nucleus we have already discussed in case of hydrogen. Okay, and that corresponds to n is equal to infinity when, so as I told you, when you give enough energy, hydrogen plus the nucleus and electrons are well separated, and it is, you say that ionization has occurred, they are infinitely separated. Okay, the, so so energy of a bound state is always uh, quantized, but beyond this the energy is, when it is not no longer part of an atom, the energy of electron is not quantized, it will vary continuously. Okay, and that's what this colored shading that represent, color जो दिया ना, शेडिंग जो दिया गया है ऊपर वहां पे, वो जो पर्पल डार्क पर्पल जैसा शेड है, वायलेट पर्पल, वो इसीलिए दिया गया है, दैट इज अ कंटिन्यूम ऑफ एनर्जी स्टेट्स, यही यही लाइंस का कलर है जो वहां पे मेंटेन किया गया है. सो कंटिन्यूम ऑफ स्टेट एनर्जी कैन वेरी कंटिन्यूअसली. सो दिस इज दिस पार्ट ऑफ दिस साइड इज व्हाट वी, ये जो साइड है ये अनबाउंड स्टेट, this whole thing is what you have bound state, energy quantized, cannot change arbitrarily, cannot change continuously. Unbound state, here energy is not quantized, changes continuously. Electron is no longer part of the, electron is no longer part of the atom. ठीक है, so this is the difference that you have. Okay, it is not feeling, so that's what we mean by unbound state and bound state. So a bound state, यहाँ पे हम कह रहे हैं आपको, it behaves as a standing wave.
when we are talking about this system, this is where we are talking about standing wave. And when we are talking about an unbound state, that is, now it is no longer a standing wave, it will be behaving as treated as a traveling wave, which can have continuous change in energy. A standing wave can have certain, so this is a fundamental difference, fundamental point that you should keep in mind. Many people do not won't be able to tell you this point. Okay, so unbound state of an electron is when you have given enough energy, the quantum number changes to infinity, n is equal to infinity, so that is infinite. So that can happen when a photon collides with that atom, when a light interacts with that atom. If it gives out, if uh, deposits enough energy into the system, then electron will be ejected out, and that unbound electron are not quantized and form a continuum of states, continuum जो वहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है. And Rydberg constant that we have been referring to again and again, it is a constant, Rydberg constant defined here. So mass of electron E to the power 4, and so it will change from atom to atom. Actually, we take the mass of electron as a only an approximation. It is the mass of the electron and the nucleus, that reduced mass of the system is taken into account. So that is where it takes a picture. So mu h by me, so this will be other atom, so mu will be different, and you can have the change in like that. So this is how the energies of the atomic orbitals as per in hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम के केस में अक्सर लोग यही गलती करके आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, और बार बार लोग वही गलती करके आते हैं कि इससे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन एटम में 3s 3p 3d का एनर्जी क्या होगा, एक होगा, डिफरेंट होगा, कैसा होगा. सो इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम और एनी अदर वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, 3s 3p 3d 2s 2p, they will have same energy, they are all degenerate. 4s 4p 4d in hydrogen atom are degenerate. Okay, yes, say, you want to say something? What's that? Okay, so this is your hmm. So remember, this is your energy level diagram for hydrogen atom, where 2s 2p are the same, only n is the determining factor. Principal quantum number determines the energy, total energy of the system. Only in case of multi-electronic system, n and l will also determine a small part of the energy, n a major part. So that will be the case when you have more than one electron. अभी उसकी जरूरत नहीं है. अभी आपको, आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे इन हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हाइड्रोजेनिक एटम्स का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज. दैट मीन्स, व्हाट डज दिस मीन्स, हाइड्रोजन लाइक species, or we say one electron atom having one electrons. So like examples that we can discuss is like we have just now considered helium plus is hydrogenic atom, lithium 2 plus is another hydrogenic atom. So all of them have this kind of structure behavior. So n is the sole determinant of the energy. And then we say that so all the orbitals that you find with a particular value of n are said to form a single shell of the atom, and they are also represented by corresponding capital letters k, l, k shell, l shell, m, n shell. So this is the capital
English alphabet that we follow for naming them are these shells, or for now the orbitals that we are talking within the shells that which correspond to different values of L, they are labeled S, P, D, F, G, H, I and so on. इस तरह से सब shells का, and they are said to be one, the orbitals corresponding to one L value are said to form a subshell within a given shell. So S subshell, P subshell, D subshell. So it has 5 orbitals, 3 orbitals, 1 orbital of this. And if you are asked what is the degeneracy in hydrogen atom in shell, so accordingly it is, there are 5, 3, 8 and 9. So 9 orbitals having same energy. So in a hydrogen atom, what you see here is, take the example of third shell. 9 orbitals, sorry, 9 orbitals, same energy, they are all degenerate. We say that they are all degenerate. 9 orbitals that we have in third shell is all are degenerate in case of hydrogen atom. So or you say that degeneracy of n is equal to 3 is 9 shell, so orbitals in that are having same energy. So n square, so degenerate or degeneracy is equal to n square in case of hydrogen atom, very clear. So that's how we represent them. Okay, so another way to write the same thing is like, after the box like structure, we draw this box like K shell, n is equal to 1, L shell, M shell, and this is S subshell, P subshell, D subshells. So this is what is shown clearly over here, and we say that the energy level is n square fold degenerate. So this is uh, 4-fold degenerate. So we say that this will be 4-fold degenerate. We say that this is 9-fold degenerate. Okay, so this degeneracy is what we do. So now we can move to the other part of so we have understood. Okay, before we move to the angular wave function, I would like to make sure that you have understood the radial wave functions thoroughly, and you are able to solve problems based on that radial wave functions. So in line with that, I would like to um, yeah, suppose if you are asked, if I give you an assignment to draw the rough sketch of all the orbitals, rough sketch of what? Radial wave function, radial density, draw rough sketch of sketches of one of the functions for 4s, 4p, 4d and 4f orbitals
orbital showing radial wave function to radial density function 3 radial. अगर ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ of rough sketches of this thing for of radial wave function and for 4s 4p 4d and 4f orbitals radial probability function. Okay, so 4f function 4f orbitals. So what you are going to plot here, you understand what you will do. This one will be capital R versus R. What will this one will be? Capital R square versus R. And what was the third one will be? You have been multiplication of 4 the density with the 4 pi R square dr versus R. So these three things you have to do. कैसे आप करेंगे ये कीजिएगा आप. How will you start thinking? And so let me tell you what you have to do. So this is what I have asked, so I add another slide to answer this. How will you start? सबसे पहले देखिए हमें 4s का अगर करना है, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 4s ऑर्बिटल. हाउ डू यू स्टार्ट थिंकिंग? रेडियल वेव फंक्शन का सारा प्रोफाइल आपको दिखाया, सब कुछ समझाया. अब आप कैसे सोचना शुरू करें? पहले आप देखिए हाउ टू डू इट. 1 रेडियल वेव फंक्शन, हमें प्रेडिक्ट करना है कि रेडियल वेव फंक्शन कैसा दिखेगा. हाउ विल द प्लॉट ऑफ capital R versus small r will look like? Okay, how will it appear? So what will be a line of thinking? First, number of nodes. 2 पॉइंट नोट कीजिए. नंबर ऑफ नोड्स n minus l minus 1. So what is this? 4 minus 0 minus 3. 3 nodes would be there. So this is an important point you have noted. Second, you already know it will have maximum amplitude at the nucleus. All s orbitals have maximum amplitude at the nucleus. बाकी किसी का नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ s ऑर्बिटल्स का होता है. अब आप इतना सोच लिया तो आप ड्रॉ करना शुरू कर सकते हैं. 3 नोड होंगे, मतलब 3 ऐसा पॉइंट बनेगा जहां पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होगा या नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज होगा वेव फंक्शन का. सो हाउ विल यू ड्रॉ? इतना हिंट काफी है. अब आप ड्रॉ कर सकते हैं. स्टार्ट ड्रॉइंग. तो ये मेरा वाई एक्सिस पे कैपिटल आर लिखेंगे और यहाँ पे हम स्मॉल आर. ठीक है. अब आपने स्टार्ट करना है. यू विल बी, आप कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एट द न्यूक्लियस. सो शो द मैक्सिमम हियर. स्टार्ट फ्रॉम हियर सम पॉइंट and then it will sorry and then start dropping from that point. Then 3 nodes, 3 node भी आएगा. तो you started from the maximum and start drawing, keep moving, and then it hits the reference line. The amplitude goes 0 and turns negative. So positive से negative हो गया. फिर दूसरा नोड आएगा जब ये, और ठीक है, और इधर हाँ
तो इस तरह से ये नोड, और फिर you should have you should have three nodes. एक मिनट, one, this is the second node, then it rises on this side, and then again like this. So I have successfully predicted how the curve will look like, capital R versus R, something like this. Three nodes, I have shown nodes, node 1, node 2, three nodes are shown, and then it will decay, exponentially decay. You know all the wave function, radial wave function, so all radial wave function सब में एक्सपोनेंशियल टर्म होगा, डिके एक्सपोनेंशियली. सो एक्सपोनेंशियल डिके का मतलब ई टू द पावर माइनस एक्स वाला ग्राफ फाइनली कैसे डिके करता है, इट बिकम्स एट जीरो एट इन्फिनिटी बिकम्स, so this will becomes zero at infinity. So I have, with these points in mind, I have successfully predicted how the curve will look like, how the plot, and I can draw it. So the rough sketch is here. Right, now when I have to plot radial electron density, I have to square it. Square करेंगे तो क्या होगा, the values will increase. So हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव में जो आ रहा है उसको पॉजिटिव करते जाओगे. और आपने ध्यान दिया, पहला वाला अगर मैक्सिमम था तो दूसरे नेगेटिव साइड में जाएगा तो उससे कम होगा. फिर उसके बाद जब दूसरे नोड के बाद ऊपर जाएगा तो वो भी उससे थोड़ा सा कम हाइट पे रखेंगे. सो एम्पलीट्यूड जो होगा, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो नोड को क्रॉस करने के बाद दूसरी साइड जाएगा, वो ग्रेजुअली घटता जाएगा. ये ध्यान रखना है. मैक्सिमम ऑन द नेगेटिव साइड हियर, हियर एंड हियर. देखिए कैसे घटता जा रहा है. सो ऐसा आप देखिए, आप स्टैंडर्ड बुक्स में भी देखिएगा, ऐसे ही रहेगा. अब आप इसको स्क्वायर करेंगे. सो दिस इज हाउ वी हैव प्रेडिक्टेड दिस फॉर्म. देन स्क्वायरिंग विल, इफ वी वांट टू, इसको थोड़ा सा रब ऑफ कर दें. सो नोड्स की पोजीशन को मेंटेन करते हुए अब आप स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन करेंगे तो वो भी पॉसिबल हो जाएगा. सो ये हमने किया, और अब इसको आप स्क्वायर करेंगे. स्क्वायरिंग ऑफ द सेम फंक्शन, एंड यू, थोड़ा सा इसको मैं टू द स्केल करना चाहता था लेकिन कोई नहीं. सो ये आपका स्क्वायर होगा तो वैल्यूज बढ़ जाएंगी एक्चुअली वाई एक्सिस पे, और ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव होगा. एक उससे छोटा, फिर दूसरा, तीसरा उससे भी छोटा. सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है. मतलब अब आपको स्क्वायर करना, मैं इसी को करते हैं. सो आई एम स्क्वायरिंग दिस फंक्शन. सो इफ आई एम trying to show this as r square, then keeping the position of nodes fixed, I will just make it like this, and इधर वाला भी ये इजी होगा मेरा, ऐसा. सो ये स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन है. एक्चुअल में स्केल, अगर टू द स्केल ड्राइंग होगी तो जैसे स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू बढ़ते, दो का होगा 4 हो जाएगा, 6, इस तरह से स्क्वायर करते जाना. सो दिस इज द कैपिटल R स्क्वायर, देन मल्टीप्लाई बाई 4 पाई r स्क्वायर r, 4 पाई r स्क्वायर डी आर. जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, सो इससे मल्टीप्लाई करना है टू गेट द प्रोबेबिलिटी. सो इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी, यू नो, द थिंग्स विल change. So probability will be
like because you are multiplying with 4 pi r square, it will be 0 here, and then it will start rising. थोड़ा सा और अच्छे से करना पड़ेगा, थोड़ा सा सेकेंड वन, 1 2 3 4, एंड देन कुछ ऐसा आएगा. सो दिस इज योर r square into 4 pi r. So this is the multiplication that we are talking about for pi r square dr versus r. So इस तरह से, so this is your most probable radius. So this is your most probable radius. Maximum probability is here, and these are subnodal maxima. So with proper labeling, I can show everything maxima. So there are 3 subnodal maxima, 1 2 3 in this case. So something like this would be there. So S का आपने कर लिया. अब इसी तरह से P का भी आप कर सकते हैं, D का भी कर सकते हैं, F का भी कर सकते हैं. P D F, they will have zero amplitude at the nucleus. ठीक है, इसका बस ध्यान रखना है. तो इसको कैसे करेंगे? Let me just point, let me take another example. And then, so you have been asked to do for the same thing for 4p. 4p के लिए करना है. So how will you start? हाँ, क्या? एक मिनट कि जैसे कि आपने ऑब्जर्व, अगर देखिए यही ऑब्जर्वेशन आपको आपका स्ट्रांग होना चाहिए. आपको मैंने बहुत सारे ग्राफ दिखाए हैं. एक ऑब्जर्वेशन आप यही ध्यान से देखिए तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि जब आप प्रोबेबिलिटी वाला मैंने कहाँ पे दिखाया, हाँ ये नहीं, इसके पहले वाला, इसके पहले ये ध्यान दीजिए. जैसे ये सिर्फ आपको 2s का है, हाँ 1s, ये 2s का जैसे था. ध्यान से देखिएगा, वेव फंक्शन वर्सेस आर है. तो पहले मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, उसके बाद जो दूसरे साइड गया नोड के बाद, वो उससे कम होगा. अब इसको स्क्वायर करेंगे तो बढ़ जाएगा, इंडिविजुअली नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया. अब देखिए जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 पाई आर स्क्वायर के बाद, वो देखिए, तो देखिए ये वाला छोटा हो गया. दिस दिस वन इज स्मॉलर बिकॉज 4 पाई आर स्क्वायर टर्म इज राइजिंग इन दिस साइड. इट हैज अ स्मॉल वैल्यू एंड स्लोली, बट दूसरा वाला है ये बड़ा हो गया है उस कंपैरिजन. this has become larger. So this pattern will follow in all probability curves. मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले में आपको इधर ज्यादा दिखेगा, बाद में प्रोबेबिलिटी वाले साइड में, फिर प्रोबेबिलिटी के डायग्राम में ये वाला बाहर वाला मैक्सिमम हो जाएगा. So that is because of this function 4 pi r square increases rapidly. पैराबोला है ना, तो आर स्क्वायर पैराबोलिक फॉर्म में ये रैपिडली ऐसे राइज करता है ना ये. सो इट इज राइजिंग वेरी sharply for pi r square term, and so this is happening. So that is something to be observed very carefully. जब आप ड्रॉ, जब तक आप खुद से ड्रॉ नहीं करेंगे, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो. So this is happening like here in all the comparisons. Here you can see the scales are changing. 2 का 4 हो गया है. अगर हम एक ही स्केल रखेंगे तो हमें ये स्क्रीन से बाहर ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है, उसी तरह से आप मैक्सिमम रेडियल प्रोबेबिलिटी इसको मल्टीप्लाई किया तो वो सब स्केल चेंज हो रहा है. लेकिन अब आप देख रहे हैं जो मैक्सिमम वाला पॉइंट था वो अगर यहाँ पे था, अब ये शिफ्ट यहाँ पे हो गया 4 पाई आर स्क्वायर की वजह से. ये 2s वाला है जीरो लाइन, और इसमें भी अब यहाँ पे मैक्सिमम आ गया. ये देखिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोफाइल यहाँ पे था मैक्सिमम, अब ये प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में
वॉल्यूम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पे। अब इसमें भी देखिए 2p वाले में भी ये फंक्शन है, यहाँ से ऐसे राइज कर रहा है, ऐसे जा रहा है। इसका पोजीशन देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पे था, स्क्वायर किया वहीं पे रहेगा, ठीक है। लेकिन जब 4 पाई r² से मल्टीप्लाई किया तब वो शिफ्ट कर गया है टुवर्ड्स बाहर की तरफ। ये बारीकी फाइनल पॉइंट्स है जो आपको बन रहे थे। सो इस तरह से ये आप देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी। ये कैपिटल आर का प्लॉट है 3s 3p 3d के लिए, ठीक है। अब इसको जब स्क्वायर करते हैं तब स्क्वायर, जो बीच वाला पार्ट है जो हमने मिस आउट यहाँ पे किया हुआ है, ये आप इजीली कर सकते हैं। इसको ऐसे कर देंगे और ये भी ऐसे हो जाएगा। तो ग्रेजुअली आप हर बार ये भी देख रहे हैं कि जो एम्पलीट्यूड है वो थोड़ा कम हो रहा है। इस यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है इस साइड में, और ये वाला जो है जब नोड पार करके उधर जाते हैं तो इट इज ऑलवेज in decreasing trend that will follow the maximum on the other side after crossing the node, first node here. Then on the positive side it comes again and it is slightly less. In all the cases you will have, यहाँ पे भी ये मैक्सिमम है, फिर उसके बाद जो इस साइड में एम्पलीट्यूड है वो कम होगा। तो जितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे उसके हर एक के बाद आप वैसे एम्पलीट्यूड ड्रॉ करोगे। स्क्वायर करोगे तो वैसा ही पैटर्न रहेगा, बस ये पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर करने पे। लेकिन जो फाइनली जो प्रोबेबिलिटी वाले में होगा उसमें आप देखिए जब 4 पाई r² से कर रहे हो तो इधर वाला r² मैक्सिमम रहा होगा, लेकिन यू आर दिस इज बिकॉज ऑफ 4 पाई r² इज स्मॉल वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, इट द दिस वैल्यूज द प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज स्मॉल, एंड व्हेन यू आर मूविंग अवे तो वो बड़ा यहाँ सबसे लार्ज वाला यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। उसी तरह से इसमें भी ये यहाँ पे स्मॉल दिख रहा था, अब ये देखिए यहाँ पे है ना। So this is what I was telling you, that you keep this in mind when you are drawing it. You always also think about this में कि कोई नोड नहीं है, वहाँ पे भी देखिए जो फाइनल ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला पॉइंट था 200 से 4, ये टू द स्केल है, एकदम परफेक्ट ग्राफ है ये एनिमेटेड ग्राफ नहीं है, ये मतलब एनिमेटेड का ही कैलकुलेटेड है थ्रू कंप्यूटर सिस्टम्स। तो ये 200 से 400 के बीच में था। अब आप देखो इसमें प्रोबेबिलिटी वाला पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये ड्राइंग में आपके दिखना चाहिए, दिस शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर रफ स्केचेस एज वेल। दैट्स द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू कन्वे जब मैं आपको वो दिखा रहा था, ठीक है। तो इसी तरह से आप 4p, हाँ, तो हमने यहाँ पे आपको कहा कि हम आपको जैसे 4p का, अब हमने कहा कि अब 4s का तो मैंने कर दिया, अब जल्दी से मैं 4p का भी आपको 4s का बता दिया, 4p का कैसे करोगे। रेडियल वेव फंक्शन, थिंक अबाउट इट। रेडियल वेव फंक्शन मुझे ड्रॉ करके बताना है कि कैसा दिखेगा। सो आई नो इट इज p ऑर्बिटल, एम्पलीट्यूड विल बी 0 एट द न्यूक्लियस, एम्पलीट्यूड 0 एट r इज 0, ठीक है, एट द न्यूक्लियस, ठीक है। सेकेंड, सो दिस इज व्हाट वी नो फॉर p d f एनी अदर ऑर्बिटल, s को छोड़ के बाकी सबका 0 ही होगा। So same for and then it will have number of nodes, number of nodes is 4 minus 1 minus 1 n l, which is 4 minus 2 is 2, number of nodes will be 2. So I will draw it, start drawing it, the thing. So on the x-axis I am writing r, the radius, the radial distance, and then so amplitude should be 0 at the nucleus, and then it will start rising, reach a maximum point, and then it will start decreasing. It is going here, first node, and then other node, and after reaching this then exponential decay. So then you show this decaying to the oops, so I think we have so this is your 4p, something like this.
एंड देन यू, अगर आपका ये बन गया तो प्रिडिक्ट करना बहुत आसान है. यू जस्ट, you have learned the basic features of radial wave function. There is exponential decay in all of them. That component will be there. So all the number of nodes, then you can node 1, node 2, two nodes have been shown, and so you can do it. So 4s, 4p, 4d, 4f सबके लिए आप कर सकते हो ऐसे. ठीक है. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही. वी विल स्टार्ट एंगुलर वेव फंक्शंस टुमारो.